Assalamualaikum. How are you all? I hope all of you are fine. Okay, today we're going to learn something about the blood vessels. Very briefly, बहुत आसान सा करके आप लोगों को बताऊंगी. ब्लड वेसल्स के बारे में हमने पढ़ना है और जो बच्चे जो हैं इस चैनल पर हैं कोशिश करें कि तो वीडियोस की लेंथ भी मैंने कम कर दी है. कोशिश करें कि लेक्चर्स आप देखें सो दैट बेसिक कंसेप्ट्स आप लोगों को समझ आएँ, बेसिक चीज़ें आप लोगों को समझ आएँ और डिटेल के लिए फिर आप उसके बाद किसी भी बुक को रेफर कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर आई जस्ट ट्राई टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल ताकि आप लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो दे शुड बी वेरी क्लियर फॉर यू. नाउ ब्लड वेसल्स में टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू कंसीडर द मेन थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी. We have blood vessels of various diameters, but in this one we will just consider the generally the three main types. जैसे कि the arteries, which are shown in red color, the capillaries, which are showing the network, and then the veins, which are shown in blue color. These veins are shown in blue color just to show that most of them they contain only deoxygenated blood. ठीक है, तो अब हम जाते हैं टुवर्ड्स द प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन में फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वहां पर व्हाट डू वी हैव. The third component of the blood circulatory system is the blood vessels. The first component is the pumping organ. The second component is blood itself, and the third component is the blood vessels. The blood vessels in our body are actually basically three types: the arteries, the capillaries, and the veins. Our blood system is actually a closed type of blood system. First of all, let me clarify this point before coming to the comparison. Our blood system is actually, I have come to the board, it is a closed circulatory system. It is a closed circulatory system. By a closed circulatory system, we mean that the circulatory fluid does not come in contact. It does not come in direct contact. Blood. It does not come in direct contact with the body tissues. बिल्कुल भी बॉडी टिश्यूज के साथ आपका जो ब्लड है, ब्लड सेल्स हैं, वो कांटेक्ट में नहीं होते. ठीक है, तो खुदा ना खास्ता अगर किसी को इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए, मींस के ब्लड स्टार्ट्स टू लीक आउट ऑफ द वेसल्स, तो इट बिकम्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन. ठीक है, क्यों? बिकॉज आवर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ क्लोज टाइप. द सर्कुलेटरी फ्लूइड इज कन्फाइंड इनसाइड द vessels. हाँ, इसमें से exchange के लिए some of the plasma, some of the liquid oozes out of the vessels, but the blood cells, the red blood cells, the major blood cells do not come in direct contact with the blood, with the body tissues. Such a system is said to be a closed circulatory system. Open circulatory system हम लोगों ने आर्थ्रोपोड्स में पढ़े हैं. इस चैप्टर के बाद आप लोगों को एनिमेलिया की वीडियोस और एनिमेलिया के कुछ लेक्चर्स जो हैं इजी लेक्चर्स मैं अपलोड करूंगी. प्लांट फॉर्म एंड फंक्शन के भी सम लेक्चर्स आई विल अपलोड देम. ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास आर्थ्रोपोड्स में है. सबसे अच्छा एग्जांपल है जिसमें द ब्लड फ्लोज थ्रू द बॉडी साइनसेस. बॉडी साइनसेस का मतलब होता है बॉडी स्पेसेस. ठीक है, जो उनका विसरल साइनस है, उसका न्यूरल साइनस है, जो बॉडी स्पेसेस हैं वहां पर आपका उसका जो ब्लड है वो यहाँ पर आराम से फ्लो करता है. हमारी बॉडी में ब्लड इज नॉट ओपनली अलाउड टू मिक्स विद द बॉडी टिश्यूज. ठीक है, नाउ द ब्लड वेसल्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी हैव बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, एंड दीज थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, व्हाट आर दे? They are the arteries, the veins, and the capillaries. Arteries, veins and capillaries. ठीक है, इनका हमने structural difference भी देखना है. We have to see the structural comparisons and we have to see the functional comparisons also. ठीक है, we are going to see the structural comparisons and the functional comparisons also. तो ये चीजें जो है ना, ये आप लोगों को जहन में रखनी है. वीडियो बिल्कुल देखें आप लोग एंड तक. ठीक है,
और उसके बाद अपने फ्रेंड्स को भी रेफर करें वीडियो। जो बच्चे इस चैनल पर नहीं हैं, ब्रिंग देम टू दिस चैनल एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर देम टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स। हर क्लास का बच्चा, इवन जनरल साइंस के बच्चे भी इस चीज़ में से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट दे कैन कैरी इट। इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड चैनल बेटा। आई हैव केप्ट माई चैनल वेरी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ट्राई टू मेक गुड यूज ऑफ द लेक्चर्स। ठीक है, फंक्शनल और देखते हैं इसमें हमारे पास क्या है। ठीक है, नाउ लेट अस गो बैक टू द प्रीवियस प्रेजेंटेशन और उसमें फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे पास कंपैरिजन क्या है। ये देखिए, ये आर्टरी है। जस्ट बाय लुकिंग एट इट हमें समझ आ जाती है कि इसमें डिफरेंस कितना ज्यादा है। ये वेन है and this is the capillary. Now when we look at the artery and the vein, we see that the artery and the vein are made up of three layers: an outer layer, a middle layer, and the innermost layer. The outer layer is actually a tough membranous layer. ठीक है, फिर the middle layer is made up of a very strong elastic muscle, जो कि फिर इसको बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी देता है। इट हेल्प्स इट टू स्ट्रेच। देन इंटरनल लेयर भी इलास्टिक है। ल्यूमेन इज एक्चुअली द कैविटी दैट इज प्रेजेंट इनसाइड एंड द इनरमोस्ट लेयर इज नोन एज द एंडोथेलियम। थ्री लेयर्स हैं: outer layer, central muscular layer which is thick, and inner smooth muscle के साथ we have the endothelium. The artery and the vein have three basic layers. ठीक है, however the vein has valves also present. Valves क्यों present है? To prevent the backflow of blood, because यहाँ पर no pressure is operating to push up the blood. यहाँ पर the pressure is operating from the heart to push up the blood to different parts of the body. This is actually there is no pressure present over here, so what happens, the valves have to be present to prevent the backflow of blood. और फिर ये हमारे पास capillaries हैं जिसमें just inner layer है endothelium. What comes to your mind? एंडोथीलियम, सिर्फ एंडोथीलियम क्यों है कैपिलरीज के अंदर? एंडोथीलियम इसलिए है क्योंकि कैपिलरीज आर एक्चुअली दे आर इन वेरी क्लोज कॉन्टेक्ट टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिकम्स वेरी इजी थ्रू दिस सिंगल थिन वॉल्ड लेयर ऑफ द ब्लड वेसल। ठीक है, इनमें से एक्सचेंज मटेरियल इज नॉट पॉसिबल। यहाँ से जहाँ पर भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इज टेकिंग प्लेस, it is going to be through the capillary network and it is made up of endothelial tissue. Now arteries, the vessels which take blood away from the heart. I told you people that it is a distributary system. The arteries make up the distributary system of the circulatory system. Like most of them carry oxygenated blood except the pulmonary artery. ज्यादातर में क्या है, और लेकिन pulmonary artery is also a distributary system. It is carrying blood from the heart to the lungs. Arteries are actually a distributary system. The walls of the artery are made up mainly of three layers: the outer connective tissue and elastic fibers, the middle thick one which is the main muscular tissue, and the inner endothelium. And then we have the lumen. The lumen of the artery is less than the lumen of the vein. When the artery in the middle layer contracts, blood flow reduces and vasoconstriction occurs. जब middle layer contract करती है तो artery जो है उसका size reduce हो जाता है, that is known as vasoconstriction. When the muscles are relaxed, vasodilation हो जाती है और आपकी artery जो है वो उसका diameter it increases. Hardening of the arteries is known as atherosclerosis. This is, we will study this in cardiovascular disorders. ठीक है, atherosclerosis, arteriosclerosis, atherosclerosis, these are actually hardening of the tissues जहाँ पर calcium deposition हो जाती है following cholesterol. Now these are the main layers of the artery. इनको हम कहते हैं tunicas. The outer one is the tunica externa, या tunica external, या tunica adventitia. It is made up of some elastic fibers and collagen fibers. The middle one is the tunica media, which is the muscular, the main muscular layer. It is made up of elastic fibers also. It is made up of collagen. It is made up of smooth muscle. मतलब ये है कि it is not under your control. Smooth muscle is totally under the control of the brain. Then the inner one is the tunica intima.
ठीक है. It is made up of smooth muscle and collagen fibers, and these are all elastic in nature. This is the lumen, the cavity, the tube. It is narrower in the arteries as compared to the veins. These three layers are present in the vein also. In the capillary, only this layer is present. अथेरोस्क्लेरोसिस में देखें कि डिपोजिशन हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का. फिर उस डिपोजिशन के अंदर जब कैल्शियम आना शुरू हो जाता है तो फिर क्या होता है, तो फिर इसकी हार्डनिंग हो जाती है एंड द ल्यूमेन जो है उसकी कैपेसिटी, उसका जो नैरो डायमीटर है वो नैरो, इट गेट्स नैरोअर. वेन्स, the blood vessels that transport blood from the body towards the heart. This is a collecting system which collects blood from various parts of the body and brings it back to the heart. The walls of the vein have the same composition as that of the arteries, except for the middle layer, tunica media, which is thinner in the veins as compared to the arteries, and then valves are present inside the veins. Semilunar का मतलब देखते हैं. Semilunar जो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है half moon shape. ये देखिए, semilunar valves, they are present inside the arteries. Semilunar, half moon shape. Okay. Capillaries क्या है? Blood vessels with walls only one layer thick. Exchange of gases and waste materials between the blood and the body cells occurs at capillary level. बहुत important point है. Now look at this. This is the artery breaking down into arterioles and then capillaries. This is the capillary network, which is intermingled with the lymphatic vessels. We're going to study about lymphatic vessels also. This is the collecting system. And these are the venules, and the venules are going to the vein. The fluid between the capillary, between the body spaces is known as the interstitial fluid, and it oozes out of the capillaries, and oxygen and food material and enzymes and hormones, everything is present inside this in dissolved state. ठीक है, आगे चलो. Now comparative account देखें. Artery, कैपिलरी, वेन. वेन देखें थोड़ी सी स्लगिश है, इतनी इलास्टिक नहीं है, इसमें मिडिल लेयर थिन है. ल्यूमेन ऑफ द वेन इज मोर देन द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी. दिस इज इलास्टिक आल्सो, बट दिस इज वेरी इलास्टिक. इसके अंदर वाल्व्स हैं, यहाँ शो नहीं हुए हुए, लेकिन आई हैव शोन इन द फर्स्ट स्लाइड. और यहाँ पर आपके पास यू डू नॉट हैव वाल्व्स. दिस वन is operating by the pressure of the heart. इसके अंदर कोई pressure नहीं है. इसमें blood movement takes place by your breathing activity, by the activity of your body muscles, by the activity of your skeletal muscles. और आपके चलने फिरने से, आपके movement से, आपके body organs के movement से blood is being pushed forward and stopped to flow back by the semilunar valves. If there are any questions, आप मुझसे questions पूछिए, comment section में दीजिए. ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को जो है चैनल पे लेके आइए बेटा. ठीक है, ओके, सी यू पीपल नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज.